Assalamu alaikum everyone. How are you guys? So I hope all of you would be doing really great in this COVID-19 lockdown or quarantine, especially those students who are living at hostels, Sukkur IBA University. Okay, ji, we left our lecture in the first part. We were actually talking or discussing about the ecology and sustainable development. We discussed the definition of the sustainable development. What is sustainable development? That is to meet today's requirements and needs without compromising the future generations' needs and demands and capacities, or whatever the case is. We discussed about ecology and what are the ecological imbalances that are created because of the human being, and we also talked about environmental footprint. What is carbon footprint, or what is the carrying capacity of the earth, and how much we are producing, or the consumption that we are utilizing, or the carbon, chlorofluorocarbons that we are actually producing or generating, or the pollution that we are creating are damaging our environment. So how we can control it. We also discussed about certain ecological challenges, that is to utilize or go for renewable energies and avoid or reduce the use of non-renewable fossil fuels that are actually creating problems, that are creating pollution. We also talked about global commons. What are the global commons? Global commons are the all all those resources that are commonly used by all human beings, and these resources of the earth or the planet is, you know, that there are three P's on which the carbon, on which the CSR, the corporate social responsibility, works, and one of the P that we are actually discussing today is the planet, and the rest of the two P's are the profit, people, and the planet. Okay, and the things that we are actually discussing today, we are actually focusing, primarily our focus is on planet, and the second P is the people who are actually destroying the planet, or who are damaging or harming the ecological balances and creating imbalance. So today we also talked about the various different types of population type pollution types, sorry. So what are the various different types of pollution? We discussed about air pollution, we discussed about image pollution, we discussed about soil pollution, we discussed about sound or noise pollution. If you want to further go in detail about the various different types of pollution, you can go here. Okay, let me, I think I have just closed it. Okay, not an issue. I will be sharing this link with you people very soon. So coming back towards your lecture. So what we are going to discuss about all those things in detail. So the forces of change accelerating the ecological crisis. What are those forces that are actually accelerating or exaggerating the environment? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस इकोलॉजिकल क्राइसिस को और ज्यादा खराब कर रही हैं? कमिंग टूवर्ड्स, जो मेन जो चीज है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. Since the people are causing damage towards environment or the planet, so the population, or we people, the world population is increasing at a very rapid pace. If you want to witness, coming towards, let me complete this slide and I will show you that at what pace in per second how many people are born in this world. So as the slide says, the world population in 1950 was around 2.5 billion after the World War One and Two. In 1999, it reached around 6 billion, and currently estimated it is, or it will be in 2150 or 2050 or 2100, it will reach around 10 billion population. So if you want to go further in detail, you can go and check the figure 11.1. Since the chapter number 11, we are discussing chapter number 11. 95% of the population
growth over the next 30 years is projected in less developed countries. The countries like we people, the Pakistanis, the third world countries. Thank God we are developing country, but we are not developed countries. Therefore, the third world countries like Pakistan, India, or all those rich countries are the African countries. So population growth are is going to take place in those countries. Okay, if you want to see for the live real-time data, so you can go on these websites and you will find out what is the real-time population. Okay, the Google says it's the current, it says year wise. I hope you can see it. Let me zoom it for you people. Okay, I guess it would be more is visible. Now you can see the billions on y-axis. It's the number of population in billions, and on x-axis you can see the year-wise data. And as my cursor, as my arrow moves here and there, so you see the year-wise updated results. So the current figure that the Google is showing is around 7.594 billion. It's a data that is around 2002 years old. But if you want to see the real time current data, so we have another website that actually measures the current population. So this is your current population, current world population, and look at the figures, at which figure, at which percentage, at which rate it is increasing. In 1 second you are seeing 2 or 3 boys are children are born. So you can see today the birthday, how many kids or how many children have born today. The figure is रात के 12 बजे से एट द मोमेंट 1 1:30 बज रहा है, तो इस वक्त तक तकरीबन आपके 2.25 लाख बच्चे पैदा हो चुके हैं. और द करंट डेथ ईयर, ओके, डेथ्स टुडे अराउंड जो है 2 लाख पैदा हुए हैं, तो वहीं पे 90,000 लोग मर चुके हैं. एंड द नंबर इज काउंटिंग. ओके जी, इस साल कितने बंदे पैदा हुए हैं, हाउ मेनी पीपल हैव बॉर्न एंड हाउ मेनी पीपल हैव डाइड दिस ईयर. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको कोविड की डेटा चाहिए तो वो भी आपकी लाइव यहाँ पे मिल जाएगी. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड यू विल सी द करंट फिगर्स. रिकवर कितने हो चुके हैं, डेथ्स कितनी हो चुकी हैं, ये आपका 24 आवर्स में एक मरतबा अपडेट होता है. बट ये भी these figures, the number that you are seeing here, this is the number that is actually being reported. ये बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो होगा उनका कैलकुलेशन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, वहां से रिपोर्ट हो रही है. पर हमारे यहाँ जो हर साल पाकिस्तान की रूरल, मतलब आप थर में चले जाएं या गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं या स्कर्दू में चले जाएं, वो बंदे पैदा हो रहे होते हैं. वाना फाटा में वो लोग जो पोलियो के कतरे तक नहीं पिलाते हैं, वो लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं कि उनके पास कितने बंदे बच्चे पैदा हो रहे हैं. अफगानिस्तान की डेटा के बारे में क्या पता हमें. तालिबान जो रहते ही जबलों के अंदर हैं, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ किस पेस से हो रही है, वी डोंट नो. हो सकता है हम 8 बिलियन भी क्रॉस कर गए हों एट द मोमेंट. ये 7.8 बिलियन दिखा रहा है. आई एम सॉरी, आई कॉल. So coming back, so what is the basic reason of discussing this thing is this, कि भाई, if the number of people are being born at this pace or at this rate, so these people would certainly require planet or Earth's resources. They will consume resources, and certainly they will cause pollution as well. Because if those people are consuming something, therefore they have to digest that something, and then it has to produce the byproduct. And this byproduct would be many things. It would create problems. Okay, moving forward, one of the second one of the forces that actually exaggerate the situation more is the world income inequalities. Okay, ji, rich is getting richer and poor is getting poorer. As you have been listening this quotation for quite some time, around 40% of the world, this figure is of your book,
The book says this the figure. Okay, ji. Whereas the Google says something else. This is the figure that I have just recently, a couple of minutes ago, I have just found from the Google, and I actually put that here. So about 40% of the world population has an income below international poverty line, that is $2 per day. Okay, ji. Whereas the Google says globally the 10% of the world is living on less than $2 per day. That is just over 7 billion people living on less than $1.9 per day. The World Bank International Line for Extreme Poverty. Okay, ji, this figure is of January 28, 2020, the World Poverty Statistics 2020 from Google. World income is not distributed equally, therefore, those people who are actually having resources, yeah, these people don't actually bother to think about those who are underdeveloped, are less developed, are not even developed. These people hardly make their both hands meet. They hardly earn enough to have something to eat in the evening, at least. They hardly earn enough to have one time meal. So these people actually try to do many things. The rich people actually exploits the resources. They accumulate wealth at one place. They don't distribute wealth. And the Islam, as the Islam says it very nicely, zakat system आपका जो है वो एक बेहतरीन economic system है कि वो it stops actually hoarding of the money at one place. You cannot collect money. The money has to be in circulation. तो गरीब के पास भी पैसे होंगे, उनके लिए भी कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास होगा, और जब पैसे होंगे तो वो लोग दूसरी एक दूसरे को देंगे, थोड़ा बहुत बिजनेस करेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो the world income levels are down and the population growth is increasing day by day. Okay जी, एक और चीज ये होता है कि भाई recently a study says, I'm talking about study, ऐसे हवा में हवा नहीं है. Okay जी, तो study says that because of the COVID-19 lockdown, ये जो अभी आपका recently हुआ था और ये अभी दोबारा से शुरू हुआ है, this is our first week of the lockdown. So the study says कि भाई in Pakistan the number of births actually increase. There is a possibility that next year we shall be having an increased number of births, और ये probably कहना 10% ज़्यादा होगा, because people those who sit at home, they have nothing to do but to give birth to children. This is what the study says. Okay, world income is not distributed equally. The countries are at the extreme levels. Riches, the rich countries are making money. They are exploiting poor people. They are exploiting poor nations. आप लोग यहाँ से देख लें कि भाई आपका नाइके, एडिडास, ये जो स्पोर्ट्स के आपकी नॉर्मल ट्रैक सूट्स और जैकेट्स और जर्सीज जो होती हैं, वो 3-3 4 4 हजार रुपए की आपकी एक नॉर्मल थर्ड क्लास आपको शर्ट मिलती है. आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये भी मैं कम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव हो, बट they actually get it stitched from here, from China, from these आपके एशियन टाइगर कंट्रीज जो हैं वहां से आपकी ये होती है, इंडिया से होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग इनकी यहाँ पे होती है, इनको चीप लेबर यहाँ से मिलता है, ये लेके चले जाते हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड कंट्रीज से प्रोडक्शन कराते हैं, और वहां पे जाके सेम चीप प्रोडक्ट आप लोग सियालकोट की आपकी जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड को फीफा फुटबॉल जो आपका वर्ल्ड कप होता है उसका फुटबॉल हम पाकिस्तान में बनाते हैं, और हम लोग ये अगर बनाते हैं तो हार्डली इट वुड कॉस्ट इट अराउंड 1000, पर वो जब वहां पे जाके सेल करते हैं तो वो हजारों में होता है भाई. फुटबॉल का वर्ल्ड कप का आपका जो नॉर्मल बॉल है, वो बॉल, उस बॉल की प्राइस अगर आप डॉलर्स में चेक करेंगे, गूगल करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि भाई इट वुड कॉस्ट अराउंड 20,000 और 30,000 इन रुपीज. डॉलर्स में बात करेंगे तो ये अराउंड एक 500,000 सॉरी $500 तक ये चला जाता है.
So they are actually behaving in an environmental destructive ways. Okay जी, industrialization एक और reason है, urbanization एक और reason है. These are one of the forces that actually destroys or exaggerate the ecological crisis. Industrialization में क्या होता है? The parts of the world are industrializing at a rapid pace. चाइना आप देख लें, चाइना जिस स्पीड से अर्बनाइज हो रहा है और जिस हिसाब से वो इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, इट्स रियली ड्रास्टिक, व्हिच इज अ पॉजिटिव ट्रेंड, अच्छी चीज है फॉर रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी. आपके पास पैसे आ रहे हैं, इकोनॉमिकली आप डेवलप हो रहे हैं, सेल्फ सस्टेनिंग हो रहे हैं, और आपकी पॉपुलेशन जो है वो खाने पीने के लिए खुद कफील हो रही है. यू आर बिकमिंग सेल्फ सस्टेनिंग. वो पॉपुलेशन हो सकता है वो स्लो डाउन भी हो जाए बिकॉज ऑफ these are the medical reasons कि भाई आपके पास जब पैसा आ जाता है तो आप बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं. आई डोंट नो व्हाट, मतलब इसके पीछे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं. वी कैन डिस्कस अबाउट इट बट आई एक्चुअली डोंट वांट टू डिस्कस इट हियर. ठीक है, द वे अ डॉक्टर एक्चुअली एक्सप्लेन्स दिस काइंड ऑफ फेनोमेना, आई कैन नॉट डिस्कस इट in that manner with a medical reasoning. Okay, moving forward, this economic development, however, has contributed to economic crisis as well. Okay जी, इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या हो सकते हैं भाई? आप पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हो, अर्बनाइजेशन आपकी जहाँ पे भी होती है या जहाँ पे भी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, वहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्रिएट होती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं पोल्यूशन. दे प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट्स जो आप पानी में वाटर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं. आप लोग जो केमिकल्स होते हैं उनको वाटर डंपिंग करते हो, पानी में बहा देते हो, वो रिवर्स से होता हुआ आपकी आबी हयात जो होता है, मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है. ओके, आप लोग समटाइम्स अगर इफ इट्स अ ड्राई बाय प्रोडक्ट तो आप लोग उसको जमीन पे बाहर फेंक देते हो. सॉइल पोल्यूशन उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से आपकी एरिगेटेड जमीन जो होती है वो एरिडेबल लैंड हो जाती है, वो जमीन काश्त के लिए लायक नहीं रहती है. therefore it becomes useless. So we are again having a problem. Okay, moving forward, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है चाइना का, मैंने भी आपको वही दिया, ड्रास्टिक डेवलपमेंट येट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग पोल्यूशन इज आल्सो. आप बीजिंग के लिए फेमस है. एक यहाँ पे ब्लूमबर्ग की एक आर्टिकल की आपको रेफरेंस दिया हुआ है चाइना से रिलेटेड कि भाई an estimated 80% of Chinese citizens are regularly exposed to pollution levels much higher than those considered to be safe by the US Environmental Protection Agency. Especially बीजिंग में अगर आप रह रहे हैं, हमारे एक दोस्त हैं मनोज पंजवानी साहब, वो चाइना में PhD कर रहे हैं, वो बीजिंग में हैं. So he actually tells us most of the time that I have to go. I'm sorry, let me pause it and connect it with the charger. Okay, so we were discussing about Environmental Protection Agency says that 80% of the Chinese people are exposed to the pollution levels that are considered not safe. While another study says that while China has recorded only around 4,600 COVID-19 deaths in recently COVID-19 pandemic, but apart from it, normally in China, around 1.24 million people, Chinese people, die because of pollution. Second only to China. Sorry, second only to India. इंडिया में इससे ज़्यादा लोग मरते हैं because of pollution. So वहाँ पे भी pollution बहुत ज़्यादा है, and this figure has been taken from ब्लूमबर्ग आर्टिकल है आपका, वहाँ से मैंने ये ली थी. ओके जी, लिमिट्स on growth. Okay ji, what do you mean by limits on growth? The world resource base is essentially finite and bounded. आपको ये जहन में हमेशा याद रखना है कि भाई जमीन के जो रिसोर्सेज हैं अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ के नीचे, these resources are scarce and finite. ये एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे. अर्थ हैज a limited carrying capacity. आप उस कैपेसिटी से ज्यादा तजावुज नहीं कर सकते हो, आपकी एक हद है. You have to live within your limits.
Earth can sustain certain amount of the carbon that you are actually producing. It can sustain certain amount of pollution that you are actually producing. So if you are sustaining it, you can, the environment can sustain it. Okay, the limits to the growth hypothesis suggest that human society is overshooting. What do you mean by overshooting? That means that we are creating more pollution, we are causing more damage to earth, we are causing more problems to our ecological environment एंड अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, जमीन की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हम लोग जमीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं. ओके जी, with drastic consequences if the changes are not made. If we people, if the if the people living on the surface of planet earth did not limited itself, did not limited itself to the consumption of the various resources that are referred as luxury resources, which actually cause damage to the earth, then we are going to have a problem. Okay ji, we have a smaller video that actually I wanted to show you. Okay, so let me see if what should I do. Okay, this is carbon footprint. Okay, I think I have closed it. Okay, let me copy from it here and go and paste at Google. Okay, so we were discussing about Earth's carrying capacity. I had a smaller video here that actually explains how many people can Earth support. So here we go. Let's. Around 7 billion people on Earth already, you might be wondering just how many people can our planet support? Earth's resources are limited. There's only so much fresh water on the planet and only so much food we can produce, no matter how efficiently we do it. What if we converted all farmable land to grow food for people, not livestock or poultry? If everyone became a vegetarian, scientists calculate that Earth's 3.5 billion acres of farmable land could support around 10 billion people at most. But how soon might we get there? Scientists predict that by 2050, we'll hit a global population of 9 billion, and we could reach 10 billion by 2100. But those numbers aren't going to keep going up and up and up. Scientists predict that somewhere between those two milestones, we're going to hang a population U-turn, and the numbers will start to drop. UN estimates of global population trends suggest that families are getting smaller, with data showing that the great majority of countries are experiencing fertility declines. If birth rates drop to replacement levels, 2.1 children per woman replacing their parents and making up for those who die young, and no more, Earth's population will likely stabilize between 9 and 10 billion, just about the maximum that our planet can handle. Population maximum, just one of life's little mysteries. Okay, so our Earth or our planet can sustain only 9 to 10 billion population. But if you are producing more than this thing, or if your fertility rate is more high than this thing, then you are going to have a problem. Therefore, it is now high time to have control over population growth. You or we have to start planning about family planning. Okay, ji. Study continues. A 2010 study showed that for each living human being, the earth contained 4.5 acres of biological productive land. Okay, the same thing that was actually discussed in that video, that there is around 3.5 billion acres of total farmable land that can actually feed around, if we become purely vegetarian, if we only have normal grain, wheat, rice, and all the irrigable products or vegetables. If we eat all those, apart from those normal animals, if we don't eat animals, then we shall be able to sustain our normal food carrying capacity. But
According to a study in 2010, that for each living human being, the earth contained 4.5 acres of biologically productive area. That means हर एक इंसान के लिए अराउंड आपके पास 4.5 एकड़ जमीन है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव है. फॉर्म लैंड, फॉर्मेबल लैंड, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर ऐसा. तो एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इतनी जमीन रखी हुई है. अब इससे ज्यादा रखी थी जब हम लोग इतनी पैदा हुए थे, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे लाए गए थे. बट फॉर नाउ जैसे जैसे ये आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, वैसे वैसे ये 4.5 2010 में था, तो आई गेस अब 2020 में इसका भी आधा हो गया होगा. At the same time, each person had an average an ecological footprint of 6.7 acres. सो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है, कार्बन आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके लिए एरिगेशनेबल जो लैंड है वो अराउंड क्या है 4.5 एकड़ है, जहां से आप खाने पीने की चीजें ले सकते हो. वेयर एज 6.5 एकर्स इतनी जमीन आपके लिए है एट द मोमेंट मौजूद, जो आपकी कार्बन जो भी आपने पोल्यूशन क्रिएट की हुई है, वो आपका कैरिंग कैपेसिटी आपकी जो जमीन की है वो इतनी है कि आप लोग इतना कचरा फैला सकते हो. ओके जी. What that means is that human society was using resources and productive resource producing resources at a rate that half and 1.5 times above. आप 1.5 गुना ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो, आप सिस्टम को, इकोसिस्टम को ज्यादा हार्म कर रहे हो देन एनीथिंग एल्स. ओके जी. With what the earth's ecosystem could really sustainably support. Okay ji. Moving forward, ecological footprint. What do you understand by ecological footprint? Okay ji. Ecological footprint is basically the earth's carrying capacity. The term ecological footprint has been defined as the amount of land and water a human population needs to produce resources it consumes. हम लोग जितना खाते हैं, हमारे पास कितनी जमीन मौजूद है या कितना पानी मौजूद है जो हम ह्यूमन पॉपुलेशन की जो भी नीड्स हैं वो पूरी कर सकें, और या हम लोग खा सकें, पी सकें. और जो हम लोग कचरा फैलाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, उसको एब्जॉर्ब, उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना जमीन मौजूद है या कैरिंग कैपेसिटी जमीन की कितनी है, गिवन द प्रीवेलिंग टेक्नोलॉजी. जो हमारे वहाँ इस वक्त टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हो रही है या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं. ओके जी. मैंने आपको ये एग्जांपल क्लास में भी दी थी कि भाई एक टाइम होता था जब हम लोग आपकी एज पे थे, पढ़ रहे थे, वी वर डूइंग आवर बैचलर्स, तो वी यूज्ड टू हैव बाइसिकल्स. ओके जी. मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ता था जिन दिनों में, उन लाइब्रेरी में अप्रोक्सीमेटली 1500, 1600, 2000 के करीब साइकिलें बाहर खड़ी होती थी उन दिनों में. ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, एकदम 15 साल पहले की. 15 साल के बाद आज कुछ अरसे पहले में उसी सेम लाइब्रेरी में गया था, वहां पे जहां पे वो 2000 के करीब साइकिलें खड़ी होती थी, नाउ देयर वर बाइक्स, 2000 bikes. So these 2000 bikes are actually are being run on what? Petrol पे चलती हैं. So petrol is burning. If you burn petrol तो कार्बन प्रोड्यूस होता है, और वो क्या होता है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हार्मफुल आपके कार्बन प्रोड्यूस होते हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. Not surprisingly, some nations and individuals have bigger ecological footprints. ये आपको कोई मतलब, मैं जितना सपोर्ट, मतलब जितना मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास पैसे हैं तो मैंने बाइक ले ली. ओके. जो मुझसे बंदा अमीर होगा वो ऑब्वियसली उसके पास बाइक भी होगी, उसके पास कार भी होगी. मेरे घर में मेरे अब्बू के पास इतने पैसे हैं कि सिर्फ एक बाइक है. अगर हमारे घर की मंथली इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 से 3 गाड़ियां भी हो सकती हैं, 2 से 3 या 4 बाइक्स भी हो सकती हैं. दैट मीन्स हम लोग ज्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फॉल करेंगे उस फॉल. ओके जी. इसके अलावा अप्लायंसेज, एक गरीब आदमी के घर में फ्रिज भी शायद ना हो. ठीक है, गर्मियों में आते हैं ना लोग, सर वो बर्फ
आपके घर में है तो अगर है तो थोड़ी सी बर्फ देते हैं हमें। ठीक है जी। सो कुछ लोग होते हैं, आज भी हैं, जिनके घरों में फ्रिज नहीं होती है, बाहर से वो बर्फ लेते हैं। ठीक है जी। सो बर्फ जिनके घरों में है, कुछ घरों में 3-3 4-4 फ्रिजें आपको मिलेंगी, रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे, डीप फ्रीजर्स मिलेंगे। ओके, आपकी एयर कंडीशन आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है। गरीब से गरीब घर के बंदे के घर के अंदर भी जो है 1 से 2 आपकी एसियां जरूर लगी होंगी। और पाकिस्तान है जिस मुल्क में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी मोस्ट कॉमन है, तो वहां पे तो मतलब आप खुद इमेजिन करें कि भाई चोरी की बिजली पे तो सबके घरों में विंडो एसी चल रही हैं जो सबसे ज्यादा बिजली खाती हैं। तो वो भी क्या है भाई, गरीब आदमी गरीब आदमी की ख्वाहिशें भी गरीब नहीं अमीर होती हैं, देखो हमसे ज्यादा वो पोल्यूशन ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे आर अ रिच कंट्री, देयरफॉर उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, देयरफॉर वो पेट्रोल दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है, वहां पे सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी होता है और कंज्यूम भी होता है। ओके, बहुत सारी चीजें उनके यहाँ, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है उनके यहाँ, टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं जो ऑयल पे चलती हैं। ओके जी, दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री हैं, देयरफॉर दे एक्चुअली use more oil, more fossil fuels, therefore they add more carbon to the environment. Therefore उनका एवरेज फुटप्रिंट पर एक एम्प्लॉय, एक नॉर्मल इंसान का, एक सिटीजन का है अराउंड कितना है, 24 एकड़, 24 एकड़। मतलब नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए टोटल जो थी वो क्या थी, यहाँ पिछली स्लाइड में हमने फिगर देखी थी, दिस वाज अराउंड 6.7 नॉर्मल, whereas in US it is 24 acres, more than 5 times their share of the world's resources. By comparison, in Panama, the average citizen ecological footprint is 4.6. In Tanzania, it's around 1.7. जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। Therefore, जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी जिस कंट्री में, उस कंट्री का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होगा। मतलब क्या है, तंजानिया का जो फुटप्रिंट फॉल है वो 6.7 होना चाहिए, उनका हक है, पर वो भी क्या है, अमेरिका या चाइना या फ्रांस या जर्मनी वाले खा जाते हैं। मतलब वो हम लोग अर्बनाइजेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो कोल प्रोड्यूसिंग और कोल कंज्यूमिंग कंट्री था पहला, वो था फ्रांस, उसके बाद जर्मनी। उन्होंने कोल को इस्तेमाल किया, अपनी टेक्नोलॉजी कोल के ऊपर लेके आए, बिजली तक उन्होंने कोल से बनाई। बट राइट नाउ दे हैव बैंड द यूज ऑफ कोल एंड दे आर बैनिंग अदर कंट्रीज एज वेल, बिकॉज उन्होंने कार्बन इतना प्रोड्यूस कर लिया कि अर्थ के एनवायरनमेंट को उन्होंने डिस्टर्ब कर लिया, एंड नाउ दे आर आस्किंग अस कि नॉट टू यूज द कार्बन। Individuals can estimate that on their own carbon footprint by taking a quiz available at, okay, हम लोग ये क्विज है, सिंपली करना क्या है, इसको कॉपी करना है या इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप लोग वहां पे चले जाएंगे। सो हम लोग चल रहे हैं वहां पे। ओके जी, दिस इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अगर आप ये क्विज लेंगे तो यू कैन एक्चुअली योर सेल्फ कैलकुलेट योर ओन कार्बन फुटप्रिंट, आपका कितना है, आपकी कंट्री का कार्बन फुटप्रिंट कितना है। ओके, लेट मी पॉज इट हियर, आई हैव समवन विजिटर्स एट माय रूम एट। ओके जी, सॉरी, so actually there was some visitors on my door. So we were talking about ecological footprint. So how many plants do we need if everybody lives like you? When is your personal overshoot day? So let's take this quiz and we shall be knowing about it. आपको भी मैं recommend करता हूँ कि whenever you are free, whenever you are watching this video, go for this link and take your quiz. यहाँ पे quiz में क्या है, you will be asked certain questions. Okay, what are the questions? The very first question is related to your food. It asks about how often do you eat animal based products. Okay जी, आप लोग
एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसमें मीट भी आ सकता है, चीज़ भी आ सकता है। तो यहाँ पे वेरियस थिंग्स आपकी दिखाई गई है, मीट इट सेल्फ है। सो हाउ ऑफन डू यू ईट? Not very often, but often. Okay, ji. So we take it oftenly. If you want more details about it, if you want to add details to improve your accuracy, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई बीफ आप लोग कितना खाते हैं. Okay, the beef or lamb, do you have it? Yes, we have it. A day, not every day. So normally we have it around. Pork, no, we don't have pork. Okay, the poultry, 50%. Okay, the fish or daily, twice a week, twice a week, no, once a week. Okay, eggs daily, nearly every day, often. Okay, save and next. Okay, how much of the food that you eat is unprocessed, unpackaged, and locally grown? Okay, ji. What do you mean by this unprocessed or unpackaged? This means that you don't use tetra milk, you don't use any cheese that is processed cheese. You have everything fresh. If you want to add more accuracy, so there are different options available here for you, how much of your diet is fresh or unpackaged. So mostly or most of the food is fresh. Okay, how much of your diet is locally grown? 78%, 100% तक हमारी फ्रेश ही होती है. ओके जी, अनपैकेज्ड में दूध आजकल पी रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल दूध नहीं मिल रहा. सो ओके जी, ये क्या कह रहा है, हाउ मच ऑफ योर फूड. ओके, ये हो गया आपका लेस प्रोसेस्ड 100%, अनप्रोसेस्ड होता है 96%. चलो यार, इसको हम लोग 90% कर लेते हैं. नेक्स्ट. ओके, which housing type best describes your house? किस तरह के घर में रहते हो? नॉर्मल आपका घर है, डुप्लेक्स में रहते हो, इस तरह का, इस तरह के घर को आप डुप्लेक्स बोलते हैं. यस, 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है. यस, वी लिव इन दिस टाइप. और मल्टीपल, अगर आपका कोई मल्टीपल अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट वालों की जो है वो बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट होता है. ओके, आपका घर किस तरह का है? ब्रिक और कंक्रीट का बना हुआ है? यस, इट्स ब्रिक. Okay, how many people live in your household? More than 10%. What is the size of your home? कितना बड़ा आपका घर है? ठीक है, तो मेरा घर अप्रोक्सीमेटली इतने ही मीटर्स पे होगा, 1200 स्क्वायर फीट. 1200, ये इतना ही है. ठीक है, नेक्स्ट. What, do you have electricity in your home? Yes. Okay, how energy efficient is your home? Energy efficient, what do you mean by energy? Okay, passive heating, cooling, advanced temperature control, and ventilator, low electricity usage. By no, we are average. Okay, जी. What percentage of your solar system, आप पे कोई सिस्टम लगा हुआ है? छोटा सा है. So 20% तक हमारी बिजली जो है यहाँ से प्रोड्यूस होती है सोलर सिस्टम से. Okay, compared to your neighborhood, how much trash do you generate? बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, लेस. पड़ोसियों से तो काफी दूर कम ही होता है. ओके, हाउ फॉर डू यू ट्रेवल बाय कार और मोटरसाइकिल ईच वीक? कितनी दूर तक? भाई इतना दूर तक मैं जाता हूँ, 100 किलोमीटर तक मैं सफर में आता हूँ एक मरतबा. और बाइक पे तो मैं नॉर्मली 40 किलोमीटर ले लेते हैं. इतना हफ्ते में मैं ट्रेवल करता हूँ. नेक्स्ट. ओके, व्हाट इज द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल? 1 लीटर में या 4 लीटर में आपकी गाड़ी कितना देती है? सो मेरा 1 लीटर में ये 20 भी दे देती है. तो ओके,
4 liters and सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट। ओके जी, व्हेन यू ट्रेवल बाय कार हाउ ऑफन डू योर कार पूल ये होता है कि भाई एक ही गाड़ी पे 4-5 बंदे एक साथ जाते हो। जी मेरी आदत है, मैं लेके जाता हूँ अपने साथ स्टूडेंट्स को, लाकाना के जो होते हैं उनके साथ कारपूल पे ही जाता हूँ, मोस्टली बहुत कम अकेला जाता हूँ। ओके, हाउ फॉर डू यू ट्रेवल ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ईच वीक? हर हफ्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ना होने के बराबर यूज करता हूँ, 0। डिटेल। ओके जी, हाउ फॉर डू यू ट्रेवल ईच वीक बाय ट्रेन? 0। ओके जी, सो 0। नेक्स्ट। हाउ मेनी आवर्स डू यू फ्लाई? 0 भाई, गरीब आदमी हूँ, जहाज पे तो बिल्कुल नहीं उड़ता। So here is the result for us. Okay जी, my carbon footprint ओवरशूट डे जो है वो अक्टूबर होता है। ये क्या है ओवरशूट, इसके बारे में अगर आपको डिटेल जाननी है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। If everybody lived like you, the Earth shoot day would be on this day. This means by this date we will have used as much from nature as Earth can renew in the entire year. In 2018, the Earth Shoot Day for Humanity is ओके जी। तो अगर हम लोग ज़मीन के अपने हिस्से का जो कार्बन फुटप्रिंट है, अगर यूज हम लोग अक्टूबर 6 तक जिंदा रह सकते थे, अगर प्रॉपर तरीके से मेरी तरह जिस तरह लोग रह रहे हैं, तो अगर सब इस तरह से रहें, पूरी दुनिया रहे, तो 6 अक्टूबर तक अर्थ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। और थैंक गॉड अल्लाह ताला ने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि वो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी खुद बढ़ा देता है। ओके जी, इफ एवरीवन लिव्ड लाइक यू वी नीड 1.3 अर्थ्स। तो मतलब हमें इतनी, मेरी तरह अगर रहोगे तो एक अर्थ काफी नहीं है हमें सेटिस्फाई करने के लिए। वी नीड 0.3% मोर अनदर अर्थ टू सेटिस्फाई। और जो भी मेरी तरह जो बंदा रहता है, मतलब मैं तो गरीबों की तरह रहता हूँ, बहुत सारे लोग रहते होंगे जो अयाशी करते होंगे, तो उनके लिए तो 10-12 अर्थ होंगी तब जाके ये पूरी करेंगे। इसके बारे में अगर और डिटेल जानना है, why can't I get my footprint score within the means of one planet? तो इसकी अगर डिटेल आपको जाननी है तो यहाँ पे आ जाएंगे। पार्ट 2 में आपके पास आ गया मेरा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। सो दिस इज 1.3 GA। ओके जी, नाउ योर ग्लोबल हेक्टेयर्स, इसको कहते हैं हम GHA, दैट इज माय कार्बन। योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है मेरा क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया, मुझे इतनी चाहिए पर हेक्टेयर, 2.2 पर हेक्टेयर मुझे चाहिए। ओके, कार्बन फुटप्रिंट मेरा जो है 3.7 है, बहुत ज़्यादा है। पर हमारा एवरेज जो हमने यहाँ पे स्लाइड्स में पढ़ा था वो क्या था? ये था 6.7। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 6.7 होता है। ओके जी, योर कार्बन फुटप्रिंट परसेंटेज, सो आई प्रोड्यूस दिस मच ऑफ कार्बन, 57%, 50% से ज़्यादा। हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत खराब फील कर रहा हूँ। ओके जी, प्रोड्यूसिंग, हाउ डू यू फील अबाउट इट? शॉक्ड। Yes, I know some great solutions. Now I need, if you want suggestions, they will give you suggestions next. Okay, जी, explore your data. Okay, accept the cookies. Okay, जी, how do your results compare to your country? Explore the solutions. Okay, I live in Pakistan. So Pakistan comes here. तो अगर आप पाकिस्तान कंट्री में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा ओवरऑल कितना है नेशनल फुटप्रिंट एंड, नहीं थैंक यू, बाद में कर लेंगे हम लोग। ओके, बायो कैपेसिटी हमारी कितनी थी पर ईयर? पहले हम लोग
तकरीबन 1970s की बात कर रहा है कि भाई हमारा कार्बन फुटप्रिंट पर पर्सन जो था वो क्या था, 0.7 हेक्टर्स था, ना होने के बराबर था। बायो कैपेसिटी आपकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी थी वो भी इतनी ही थी। सो हम लोग इक्वल ही चले हैं। और 2017 पे अब क्या है, हमारी बायोलॉजिकल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी 0.3 है, बट एट द मोमेंट हम लोग क्या है भाई, हमारी कार्बन फुटप्रिंट की जो परसेंटेज है वो इतना पर हेक्टर बची है। सो बायोलॉजिकल ज़मीन भी हमारे पास बहुत कम है और हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इससे और ज़्यादा अगर लर्न करना है तो आप लोग आगे जाएंगे। सॉल्यूशंस आपके पास दिए हुए हैं, आप लोग किस तरह से खुद को बचा सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल एंड अप। सो दिस इज द कार्बन फुटप्रिंट, आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। Okay, so these are the two websites where you can go and check your carbon footprint. So this is the end of the second part of this chapter. We shall continue with the second chapter tomorrow. Till then, bye bye, tata, chacha, mama, Allah Hafiz. Fi aman Allah.